Don't shy away from taking help from anyone. Yes. I shamelessly asked my branch manager, sir, वो ratio पढ़ा दीजिए. And he was looking at me. He said, "You want to me too?" I said, "Sir, समझ में नहीं." And he taught me. I said, "Okay, Sunday को मैं बता दूँगा." He taught me something. So, like if there is a movie called Dhurandhar is coming or anything, you'll have to miss out everything. So that is the part and parcel of our life. Yes. Because if you have to achieve something, तो you have to lose something. जब टेस्ट होता है ना, तब पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं. So you'll have to know. और एग्ज़ाम से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हैं, तब आप एग्ज़ाम एग्जीक्यूट कर पाएंगे. How were you able to improve upon your previous attempt? What were the things you did that made you improve your marks in this year? बट आई वुड सजेस्ट कि AI राइटिंग में हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज एग्ज़ाम में आपको खुद लिखना है. So, अपने आंसर लिखने खुद चेक करो. बट हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको चेक करना है, ग्रामरली में जाके चेक कर लेंगे क्या एरर है. बट आई वुड सजेस्ट कि AI मत यूज़ करो, बिकॉज एग्ज़ाम इज़ नॉट अबाउट AI. हम लोग प्रिपरेशन इतना सेक्लूडेड करते हैं, वो एक रूम में बंद हो गए. नो, टेक हेल्प फ्रॉम एवरीवन. ट्राई टू गेट अ पीयर ग्रुप, ट्राई टू मेक फ्रेंड्स, बिकॉज you know the journey is so difficult, boring हो जाती है, that you need a fresh of air. And friendship is something that gives you the relief. Definitely. So hello everyone, welcome to Write It. So I have a very special guest, for all of you. He has been a symbol of excellence, I would say. He has been a topper, all throughout his banking and regulatory space. And recently Niranjan has also cleared Reserve Bank of India Grade B 2025 examination. So I very much congratulate you, Niranjan. Thank you so much. Yeah. So this session, a lot of students have already sent me various questions. तो देखिए, एक तो इनकी पूरी जर्नी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने क्वेरी मेरे को भेजी है, वो सब निरंजन आपको पर्सनली एड्रेस करके देंगे. एंड दिस इज़ व्हाट द इंटेंट फ्रॉम राइट इट. और ऑब्वियसली आप सबको पता है, राइट इट हमने अभी शुरू की है. सो विद दिस इंटरव्यू वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी दैट अ टॉपर यूटिलाइजेस, सो दैट आप सबको इस वीडियो के थ्रू हेल्प हो, ऑब्वियसली. ठीक है. सो निरंजन, फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations. Thank you, sir. And I just want to understand that, how are you feeling right now? Yeah, I'm happy, but it's like neutral. Because there is nothing like कि euphoric हो गया है, कुछ नहीं. It's normal. Okay. So in this sense, for example, for a lot of students, this whole examination journey might be very much difficult, and you have been consistently, clearing all these different examinations. What is that one trade which you feel that you have, which definitely every other student should, utilize? What do you think? I think along with hard work, it's the consistency that matters. Like अगर आप एक भी घंटा पढ़ रहे हो रोज पढ़िए. It's not like studying for 7 to 8 hours and then vanishing for 2-3 days. No. Study for 2-3 hours every day consistently. Consistency is something that often people neglect. So I think that is very important thing. Okay. And this examination, again, it's a very 3-stage process. Student sometimes get very confusing कि phase 1 में इतने सारे subjects हैं, कैसे पढ़ें, उनको कैसे manage करें, फिर phase 1 के बाद phase 2 कैसे manage करें. तो management का एक बहुत बड़ा issue students face करते हैं, especially after January when they think कि examination बस आने वाला है. तो how did you ensure कि आपका temperament sorted रहे with respect to preparation? In my case, I was sorted with Quantitative English. So that was my easiest part कि okay चलो एक pressure कम है. The only thing that I had to take care was phase 2 and GA part. Okay. So GA I did in simultaneous minutes, like phase 1 phase 2 का combined. And I started with weekly current affairs because I didn't have much time. But I would suggest people to go for if possible daily current affairs. Because अगर आप डिटेल में करते हैं तो बहुत अच्छा होता है. If possible, if not, but go for weekly. Working candidates can go for weekly current affairs and revise them like as well. The major thing that is the uncertainty, because this time the examination was slightly tilted towards the banking part. Yes. So it got those who had prepared for bank exam, they got a edge. But ये हमेशा नहीं होता है. Sometimes it happens. Sometimes they would ask scheme based questions more. Sometimes the circulars will be dominating.
सो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. और एक और मिसकंसेप्शन जो बहुत से बच्चे लास्ट के 3 months पढ़ लेंगे हो जाएगा. नो, यस दिस टाइम दे लाइक एम्फसाइज्ड ऑन द लास्ट 3 months, बट हमेशा नहीं होता है. Exactly. एंड एग्जामिनेशन इज वेरी स्मार्ट. दे विल ट्रैप यू कि पहले के पूछ लेंगे. सो एटलीस्ट लाइक फेज 1 के पहले के 5 months का करंट अफेयर्स तो यू शुड नो एवरीथिंग, especially with government schemes, whatever is coming in PIB, the static component also. If the like किसी का कुछ revision हुआ है, तो you should know the static component also. तो वैसे करना है. And obviously there is a major question which is asked by me, that circulars. Obviously you won't understand circulars initially. नहीं समझ में आएगा because what is saying. But within a month जब आप करोगे तो देखोगे बहुत रिपीट होता है. ओके ये तो अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था. सो देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग. सो इट्स अ स्लाइटली डिफिकल्ट प्रोसेस. सर्कुलर इज स्लाइटली ट्रिकी, बट ओवर द लाइक पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट टू यूज टू इट. फिर वो आप समराइज कर लीजिए कि अच्छा इसमें ये इतना इतना पढ़ना है, बिकॉज पूरा सर्कुलर नहीं पढ़ना होता. देयर आर सम की पॉइंट्स यू नीड टू उतना कीजिए. एंड रिविजन इज मस्ट, लाइक वीकली रिविजन, मंथली रिविजन, एंड इफ पॉसिबल मेक योर नोट्स, like keynotes and something, so that you have the material to revise at the last moment. Exactly. And take lots of quizzes and mocks. Okay. So that's very wonderful and a comprehensive strategy Niranjan has exactly told, because this is very important. He mentioned about consistency. He also mentioned about multiple revisions. He also mentioned about making short notes that you can utilize for last minute revision. And students usually ask me कि नोट्स बनाए हैं नहीं बनाए हैं. मैंने कहा नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, आप लास्ट मिनट में रिवाइज पूरी किताब थोड़े करोगे. सो दैट इटसेल्फ इज देयर. सो एंड वन मोर इशू निरंजन, इट कीप्स ऑन कमिंग एंड स्पेशली यू माइट बी एबल टू रिलेट विद इट. आप भी वर्किंग एस्पिरेंट रहे हो, तो वर्किंग एस्पिरेंट के पास वीकडेज में 4-5 घंटे के अलावा ज़्यादा होते नहीं है. तो हाउ डू दे कोप अप विद दिस टाइम क्रंच? सी आई वुड आस्क यू समथिंग. आई वुड जस्ट सजेस्ट वन थिंग. अगर आप लाइक आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम. जो नहीं रह रहे हैं लाइक दूर है, आई वुड जस्ट सजेस्ट देम वन थिंग कि कोशिश करें जो आपके हाउस होल्ड कोर्स है उसके लिए कोई किसी को असाइन कर दीजिए. टेक हाउस हेल्प और एनी वन, बिकॉज दैट टेक्स अ मेजर चंक ऑफ टाइम. और विद जॉब आई सी अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग. आई वुड से लाइक take a support system, at least one people, so that he can or she can manage everything. ताकि आप जब ऑफिस से आए you are free, you are just studying and all that. And also don't shy away from taking help from anyone. Yes. I shamelessly asked my branch manager, sir वो रेशियो पढ़ा दीजिए. And he was looking at me, he said you want to me too? I said sir समझ में नहीं. And he taught me. I said okay Sunday को मैं बता दूंगा. He taught me something. So yes, I talked like to everyone. I reached out to my colleagues. They had good knowledge. So they used to help me out. अच्छा इसको ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो. So yes, you need to ask people कि अच्छा कुछ है तो बता दो. And also I would suggest for working, because financially थोड़ा secure है, take a course for at least phase 2, because that is somewhere you lack. वो एक बहुत मेजर चंक ऑफ टाइम देगी. बस फेज 1 आप खुद से प्रिपेयर कर लेंगे. फेज 2 में यू विल नीड सम गाइडेंस, सम कोर्स मटेरियल, सो दैट आपके पास एक रहे रेडीमेड टेम्पलेट्स रहे. सो उसमें जीए भी आ जाएगा तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा. एंड आप टाइम ऐसे डिवाइड करिए जैसे आपका अगर कोई क्वांट अच्छा है, इफ़ यू आर गुड विद क्वांट जस्ट प्रैक्टिस मॉक्स. इफ यू आर गुड विद एनी सब्जेक्ट, एंड मेक श्योर कि आपका क्यूआरई सेक्शन पहले कंप्लीट हो जाए प्री प्लस, बिकॉज even QRE is not that easy. It's of IBPS PO means level. So you will have to really work hard, and within 25 minutes you have to solve 30 questions. उसमें आपको क्वेश्चन पिक करना है, एग्जैक्टली आपको सॉल्व करना है. एंड पेपर इतना इजी नहीं है क्वांट का. तो इवन ऑब्वियसली दिस टाइम इट वाज स्लाइटली डुएबल, बट still it was difficult. So you will have to pay a lot of attention to your question selection, and especially what to do and what not to do, what to skip. That is also an art. You have to know it. Okay, and that I feel comes with practice. Yeah. Or any other thing that you would want to say? Practice and analysis. Analysis. Because the more you practice and see, and this is, I want to understand from those people who are just starting quant. So how do they approach? Because they're doing quant also, they have to do phase 2 also. How do they manage their day? If someone is not working, they can allocate their time. Like for phase 1 I will do this much, or according to their time.
बट येस दे माइट गेट ओवरवेल्म्ड. शुरू में तो सब 10 घंटे पढ़ लेते, बाद में द एपेटाइट गोज वेल. सो आई विल से कि लाइक स्टार्ट विद 2 hours. एक सब्जेक्ट पिक करो. आफ्टर दैट इफ यू फील लाइक नाउ अब मैं कंफर्टेबल हूँ, देन स्लाइटली इंक्रीज 3 hours. For gradually you start improving. Then you plan accordingly. Like what is your strength here, what is your weakness. Accordingly start करो. And then possibly within 1 month you will realize कि क्या करना है क्या नहीं. And if you are like struggling with your plan or something, you can reach out to your mentor or your anyone. Even you can reach out to me and Mayank sir कि चलो क्या करना है. Will definitely help you out कि कैसे कर सकते. And for working I would say कि आप लोग prioritize कर लीजिए. पहले phase 1. थोड़ा फेज 1 पहले कर रख लीजिए, बिकॉज फेज 2 समहाउ बाद में थोड़ा बहुत कर सकते हैं. मे बी फेज 2 का एक सब्जेक्ट आप पिक कर लीजिए, लाइक FM और ESI. इफ यू आर कंफर्टेबल विद समथिंग, पिक वन. मे बी FM पिक कर लो, बिकॉज मैनेजमेंट इज स्लाइटली इजी. वो हो जाएगा. लेक्चर्स आर देयर, यू कैन वॉच ऑन, लाइक सुमित सर के लेक्चर आपके भी है. सो वॉच देम, मेक योर नोट्स एंड देन स्टार्ट टेकिंग टेस्ट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट. वीकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वीकेंड में आपको बहुत मेहनत करना है. सो लाइक इफ देयर इज अ मूवी कॉल्ड धुरंधर इज कमिंग और एनीथिंग, यू विल हैव टू मिस आउट एवरीथिंग. तो दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. Because if you have to achieve something, so you have to lose something. Definitely. So this is how you have to manage, and it is not that difficult. You can do it. And I want to, because I was talking to Niranjan before this podcast, and I was in awe, especially with respect to how he has been, he has given SBI while he was, hospitalized also, and he was able to clear with flying colors, and how, dedicated he is. He was telling me that, when the time requires me to give as much hard work as possible, I'm giving it. I'm not saying to myself that my body is not ready. You mentioned that you slept at 2 o'clock and then you wake up at 4 o'clock to study again. So see, dedication लगता है ना, dedication लगता है. So, and just briefly, Niranjan, phase 1, how everyone should go about QRE and GA in brief, if you can tell. For QRE, I would say कि like if you are non-working, if you can manage your time well, आप पूरा पढ़ो, like each and every topic of QRE, because like if you can manage a good score in it, GA आपके लिए उतना pressurizing नहीं रहेगा. Exactly. Because 80 questions in 25 minutes, it's a huge thing. It's a pressure. So आप QRE अच्छे से कर लो, ताकि GA अगर थोड़ा भी इधर उधर गया तो you can manage. In my case, I was good with QRE, so I practiced a lot. So almost I got 62 something in 3 sections. So it was a huge, like I cleared the cutoff in that. So GA was an additional. So my total score was 96 or something. So I think that was a good strategy, because I focused heavily on QRE. ताकि मैंने कहा GA में 30-35 भी कर लिया तो like 35-36 is done. Yes. So I worked in that way, and thankfully the paper slightly, I don't know, my section got something like, and थोड़ा GA वो बैंकिंग वाला पढ़ लिया था ज़्यादा. So I was revising a lot, and thankfully it came and it worked well for me. So revision is must. And for the non-working, those who are working, pick कीजिए कौन से टॉपिक्स आपके अच्छे हैं. Like in QRE, you can go for quadratic or number series. They are short numbers. One day there will be in the paper which will be easy. तो आपको पिक करना आना चाहिए कि आपके कौन सी DI पिक करनी है, कौन सी नहीं. एंड सम अरिथमेटिक टॉपिक्स प्रिपेयर, लाइक परसेंटेज रेशियो इज मस्ट. देन यू अकॉर्डिंगली like see which topics you are comfortable. Practice a lot of data sufficiency, data redundancy, quantity comparison, and just before the exam, for everyone, go for IBPS PO means sectional quant mocks. Attempt at least 3 to 4 mocks and set a timer of 25 minutes. Because it is in exam, it's 35 to 40 minutes. आप 25 का टाइमर सेट करो, पिक अ सेट. यस इट विल बी डिफिकल्ट, बट ब्रेनस्टॉर्म की कैसे पिक करना है क्वेश्चन, बिकॉज हो सकता है पेपर वैसा आ जाए. तो थोड़ा सा लाइक डू सच हैक्स. 25 मिनट्स का टाइमर सेट किया, बट यू विल ओपन IBPS PO means, you will attempt 4 to 5 section mocks. Obviously the attempt won't be that great, you will make a lot of terrible mistakes, but you will learn a lot. And when you learn, write those things in pointers कि अच्छा ये mistakes हुई. Because I had a mock tracking score, like there was a mock tracker. I used to track each and everything, like what is happening in each and every mock, and I used to analyze everything. So it was a like dedicated rough sheet of book, like it is a booklet. I had this habit,
and I used to revise, okay, अच्छा इसमें ये किया था, this question was very good, so I will mark it out, okay, this question is very important, I will revise it again. So in between I used to pick some random questions of QRE, just to solve them whenever I used to like, अच्छा आज पढ़ने का मन नहीं है, randomly I used to put some questions and I used to solve. So that was also brain exercise. अच्छा ये तो पढ़ा था मैंने, so I used to like, revision is something that I really worked upon. Limited study, but revision is multiple revisions. And that too with practice of tests. Yeah. And because I feel like, see, this is, I don't know what students and why students feel this, because they think that if they give tests, they will get bad marks. So they do not give tests. So how do we remove students from that kind of mindset? See, I have like lots of experience. So now I'm used to like all these things. But initially, see, you won't get marks. Even when I wrote my first descriptive answer, it was, the feedback was horrible. But yes, I felt slightly bad, but I knew that I made mistakes. So I have to learn, and I have to like make it a point कि next mock में वो गलती ना हो. So I framed my answer more accurately, wrote a good introduction. Like I made sure कि मेरा introduction ज़्यादा लंबा ना हो. Like initially what used to happen, I used to write a lot of long answer, like lines and all. Now it trimmed down. I wrote it in 2 to 3 lines. I finished my like introduction. Then I focused on my body. Then conclusion is like this. So framing on that answers I focused on. So in terms of that, I worked really hard. So mocks give you a reality check कि आप कहाँ पे है. You feel like okay, I'm studying. I'm studying. जब टेस्ट होता है ना, तब पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं. सो यू विल हैव टू नो. और एग्ज़ाम से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हैं, तब आप एग्ज़ाम एग्जीक्यूट कर पाएंगे. ट्रू. जब पता ही नहीं होगा तो फिर आप इम्प्रूव क्या करेंगे? वो हमको जानना है ना कि वी वांट टू रीच अप टू दैट लेवल, एंड हाउ वुड यू नो दैट यू आर एट दैट लेवल और नॉट विदाउट द टेस्ट. So let's just focus on phase 2. Phase 2, what was your overall approach with respect to all the subjects, including objective and descriptive? Phase 2, because last year I had messed up with all the sections, I knew that I have to work really hard, especially with ESI part. So I took it a point कि phase 1 से पहले ही I'll prepare a major chunk of syllabus of phase 2. Obviously it was slightly challenging because with job it is not very easy to match everything. But in weekends I used to make sure कि अच्छा चलो आज like it's a second Saturday and Sunday. Then I will be like, okay, first day I revised everything, whatever I had. Second day I will pick one topic of ESI, one topic of FM, finish पूरे lectures देख लिए, notes बना लिए. Then I will go for objective test and one QRE sectional test. I'm done. Okay. So this was my whole day plan. So I used to plan a lot कि अच्छा आज मुझे ये करना है, like I have to do something. Whenever I used to get time, 1 घंटे का, अच्छा 1 hour is there, okay, let's do something. What I will do? Okay, do a quiz. Like random. Okay, do a daily current affairs quiz or do a QRE का quiz लगा दिया. So this is how. Like whenever I used to get time, अच्छा क्या नहीं पढ़ा है. So this was in their mind. Like I was totally into the preparation. Like I was totally drowsed into it, and I said like नहीं करना है, अच्छे से करना है. So I made sure like whatever time I'm spending with full honesty and dedication. Okay. So in the sense, especially with respect to previous attempt, how were you able to improve upon your previous attempt? What were the things you did that made you improve your marks in this year? Actually, last time, my knowledge base was very shallow. And while writing answers, I was cursing myself like what I'm writing. And somehow I cleared phase 2, but it didn't happen. Like the interview was okay, but I couldn't get a good score. So I knew what I did. So I made it a point कि this time I will prepare in a very comprehensive manner, so that at the end of the day, I have my content ready, so that I can write mocks, I can appear for the exam. So like ESI, if I have learned this growth and development chapter is done, I will go for the objective test. Then I will write a descriptive test. I will see what feedback I am getting. Then I will note down that feedback, proper analysis, and then in that manner I had a like, okay, practice is simultaneously going on. Apart from that, I had topic wise current affairs. Like for poverty, I had current affairs. Like if I am something, okay, poverty, some data is there, like Ministry of Statistics I released some data, I will include it. Acha, poverty wala sheet ka hai, like include in it. So I had my ready-made templates for it, like everything.
for each and every component of the syllabus. I had the component like static and dynamic component ready. So when the like phase 1 happened, after that I had my full notes of ESI and FM with static plus dynamic. So that helped me a lot, because after that I just switched to mocks, revised my notes, and I didn't have to do anything. Yes. So initial hard work actually helped me a lot, because after phase 1 I didn't have to much like push like अच्छा अब notes बनाने नहीं. I had my notes brief ready. Now I had to revise and like attempt the mocks and rest it. Yes, and the time is also not there, na? Because 10 to 15 days result will come and people will not study. They'll think कि होगा कि नहीं होगा, है ना, वो 15 दिन निकाल देते हैं, फिर उसके बाद वैसे ही कम दिन बचते हैं, तो उसमें आप पढ़ोगे मॉक्स लगे, है ना. तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग दैट यू कंप्लीट योर सिलेबस. जितने अभी इस साल अटेम्प्ट कर रहे हैं, मई मिड तक खत्म कर लो एट एनी हाउ, जिससे आप अभी थोड़े टेस्ट दे लो फेज 1 पे फोकस करके, एंड देन उसके बाद जब फेज 1 के बाद आप फेज 2 पे कंटिन्यूसली फोकस कर सकें. एंड बिफोर वी मूव टुवर्ड्स इंटरव्यू, निरंजन, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पीछे पड़े हुए थे और पूछ रहे थे कि निरंजन सर से पूछना, तो आई जस्ट वांट यू नो टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम. तो यू नो सुभाशीष हैं, सुभाशीष पूछ रहे हैं कि हाउ डिड ही प्रिपेयर ESI रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग आपने प्रिपरेशन किस हिसाब से करी थी, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल? लाइक आप किसी भी करंट अफेयर्स के फैकल्टी से पढ़ लो, वो लेक्चर्स में दे कवर एवरीथिंग, and mostly like whenever any report comes, all the teachers come up with videos. So whenever a video is out, you just watch that. They have covered everything what is important. From that you can prepare. Don't go for like पूरा report पढ़ने मत बैठो. Wait for some days, the teacher will come out with all the important major facts. From there you can cover. Basically the question I feel like he is asking in some context. वो इसलिए पूछ रहे हैं कि इनको लगता है कि इनको फोमो होता है कि एक टीचर का सफिशिएंट है कि नहीं है. तो इन दैट केस सिनेरियो हाउ यू नो टू टेल टू द माइंड कि जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव एन अप्रोच फॉर दिस कि आप एक सोर्स पकड़ लो, बाकी आप MCQs के थ्रू कवर अप कर लो. या तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सी द फोमो इज लाइक आई नो व्हाई द फोमो कम्स. आई हैव सीन एवरीवन एवरी डे आई गेट दिस मैसेज, भैया उससे नहीं पढ़ेंगे तो नहीं हुआ. आई नो दैट. सी you have to trust your faculty. थोड़ा भरोसा करो, क्योंकि जो पढ़ा रहा है वो भी काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा है. they have seen the exam, they have seen everything. तो जिनको आप फॉलो कर रहे हो थोड़ा भरोसा रखो, और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, रीच आउट टू देम, हैव ए टॉक, गेट द कॉन्फिडेंस बैक एंड फॉलो इट. सो आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि देखो मैंने इतने साल से प्रिपेयर किया है, मेजॉरिटी ऑफ जो फैकल्टीज़ हैं वो बिल्कुल ही मतलब बहुत बड़े पॉपुलर नहीं हैं, बट दे मेड श्योर दैट आई एम वेल प्रिपेयर्ड. सो देन आई अचीव द रैंक 1 इन SBI PO. तो कोई बहुत बड़े फैकल्टीज़ नहीं थे कि जो मुझे पढ़ा रहे थे. दे वर ऑल नॉर्मल वेरी लो प्रोफाइल टीचर्स, बट दे वर्क वेरी वेल फॉर मी एंड आई डिडंट मिस एनीथिंग. विद माई स्कोर आई डोंट थिंक आई मिस्ड एनीथिंग. आई वॉज फुल मार्क्स इन लाइक इन टू. सो you won't miss anything. The main thing is the content part. If the teacher is delivering the content, you are able to understand and grasp. That's the thing. That's it. And I just want you to also give shout out to your QRA teachers also, because a lot of students of us was also asking कि QRA के कोई teachers आप बता दीजिए that helped you. See, my view is quite like sorted. I feel कि जहाँ पे पढ़ाई होती है वहाँ जाओ, जहाँ पे नौटंकी हो रही है वहाँ मत जाओ. And I try avoid a lot of things. So for like reasoning, I think most of you will know Art of Reasoning channel. Sanjay sir, he is one of the very most popular faculties and very good teacher. Yes, you might get intimidated because he is cold sometimes. He is strict with many things, but trust me, once you follow, you will know what is reasoning. He will teach you so well that आप हर एग्ज़ाम के लिए रेडी होंगे. एंड कोई मतलब आपको दूसरा सोर्स देखने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज इन RBI Grade B क्रिटिकल रीजनिंग आता है 8 to 9 मार्क्स का. एंड इन द होल इंडस्ट्री ही वॉज द ओनली वन हु वाज टीचिंग. इवन ऑल द रीजनिंग टीचर्स सेड कि नहीं मत पढ़ो, पजल कर लो, बट ही वॉज टीचिंग. सो रेस्ट एश्योर्ड बहुत अच्छे टीचर हैं. फॉर क्वांट आई वुड से आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट बी वेरी हैप्पी. ठीक है, तो आई कांट डू एनीथिंग, बट सी आई
took help from, like when I was preparing for SBI PO, I took help from Shubham Masuraha sir. Currently he is associated with Bankers Ground by Career Will channel, एंड उनका खुद का भी चैनल है बैंकिंग मंत्रा, तो आई डिड फ्रॉम हिम. तो वेरी अंडररेटेड टीचर. आई लाइक हिज मेथड्स आर समथिंग लाइक अमेजिंग मेथड्स स्पेशली, एंड काफ़ी सपोर्टिव है, फ्रेंडली है. यू कैन रीच आउट टू हिम एनी टाइम, ही विल एड्रेस योर क्वेरी. वेरी गुड टीचर, तो आप उनको देख सकते हो. एंड फॉर इंग्लिश, इफ़ यू आर वेरी लाइक इनिशियली बहुत बेसिक है, यू आर नॉट गुड विथ, लाइक आप हिंदी मीडियम से यार कॉन्फिडेंस नहीं है, आई वुड सजेस्ट आप वरुण चित्रा सर को देख सकते हो फॉर इनिशियल फेज. फॉर ग्रामर आई थिंक स्टडी क्विक चैनल पर वरुण चित्रा सर एवरीवन नो, थोड़ा ग्रामर उनके देख सकते हो. डिसेंट टीचर है, उन्होंने आई थिंक RBI ग्रेड बी का मेमोरी बेस्ड पेपर एग्जैक्ट कराया हुआ है, सो आप देख सकते हो. अगर आपका अच्छा है इंग्लिश बहुत पहले से ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर Ratnabha Saha sir of Smart Kida. He is the, I think, the ultimate level. Okay. And his methods might be intimidating at first because उनके methods बहुत अलग है. Even I used to struggle a lot initially, but trust me, अभी के अगर मैं 10 में बोलूँ, उनसे बढ़कर कोई टीचर नहीं है. He is the killer one. आप उनके methods अगर execute कर गए तो आप पूरा, आई थिंक RBI ग्रेड बी का फेज़ 1 का तो होगा, फेज़ 2 का डिस्क्रिप्टिव भी आप हैंडल कर लेंगे. इज़ वेरी गुड टीचर, कमांड है. तो बाकी आप देखिए आपको किसके साथ कंपैटिबिलिटी आपकी हो रही है, क्योंकि वो मेन चीज़ है. बट आई वुड सजेस्ट कि फेम पर मत जाओ. सी द कंटेंट, सी हाउ द टीचर इज़ अप्रोचिंग, सी हाउ द टीचर इज़ लाइक सॉल्विंग ए क्वेश्चन. कि मेथड्स बहुत अलग होंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एंड बाकी देखिए आपको कौन सा अच्छा लगता है. Okay, so with respect to descriptive, a question from the student is also there. He's basically asking you how you prepared English descriptive, especially how you practice, and did you incorporate artificial intelligence also with respect to it, or just manual? See, in examination, I won't work. Yes, definitely. Your mind will work. It's true. तो अगर आपसे नहीं भी हो रहा इनिशियली, यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर और फ्रेम एनीथिंग, जस्ट राइट, बिकॉज यू विल गेट अ फीडबैक. सो ऑन दैट बेसिस ऑफ दैट फीडबैक इनकॉर्पोरेट ऑल दोस लाइक सजेशंस इन योर नेक्स्ट मॉक. शुरू में होगा, नहीं होता है, इवन आई वॉज स्ट्रगलिंग, बट ग्रेजुअली इट हैपेंड कि सेंटेंसेस बनने लगे, कंटेंट आने लगा. एंड व्हेन यू हैव द कंटेंट फ्रॉम योर न्यूज़पेपर्स एंड ESI, I think mostly you get the content. The main challenge is to frame that essay. Yes. Main challenge is frame the essay, like going for like अगर वो range 600 to 650 है तो उसके बीच में कैसे पहुंचना है, that is the task. So for that you will have to spend enough time in mocks, framing your questions. Like whenever you are typing an essay, initially आप एक frame कर लीजिए एक रफ शीट में कि मुझे करना क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, बॉडी कैसा होगा, कंक्लूजन कैसा होगा. इनिशियली 2-3 मिनट्स का आप एक लिख लीजिए. आफ्टर दैट यू स्टार्ट टाइपिंग. वाइल टाइपिंग मेक श्योर कि आप जब भी टाइप करें एकदम एग्जैक्टली करेक्टली टाइप करें, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, नो. इनिशियली होगा बट वहाँ से लेसन लीजिए राइटिंग में. बट आई वुड सजेस्ट कि AI राइटिंग में हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज एग्जाम में आपको खुद लिखना है. So, अपने आंसर लिखने खुद चेक करो. बट हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको चेक करना है ग्रामरली में जाके चेक कर लेंगे क्या एरर है, बट आई वुड सजेस्ट कि AI मत यूज़ करो, बिकॉज एग्जाम इज़ नॉट अबाउट AI. आई फील लाइक कि AI से अगर आप आंसर वगैरह करेंगे तो डिपेंडेंसी बन जाती है. फिर आप उसी पे डिपेंड होने लग जाते हो, उसी के हिसाब से स्ट्रक्चरिंग, उसको आप पैमाना मान लेते हो. पर AI कई बार गलत भी बता देता है, गलत भी बता देता है, तो यू कैन नॉट ट्रस्ट. एग्जैक्टली. तो 2 more questions from students, and one question is about कि especially a lot of things, RBI circulars, schemes, PIB, they are important for phase 1 as well as phase 2. Basically, students are concerned that how do they filter. I feel like that you study it directly. Why filtering? Because then again, you have to give full exam. Na? You have to clear up till interview and then get selection. You don't have to clear phase 1, phase 2. What's your take on it? See, you have your teacher who is teaching. Like he's filtering out all the content for you. Your job is to just follow that PDF, follow the class, mug that out, mug it up and vomit in the exam. That's it. That is your task. ज़्यादा दिमाग मत लगाओ. अगर दिमाग टीचर लगा रहा है, why are you spending your energy? Exactly.
And this is also very common, especially a lot of civils students are also coming to the RBI एग्जामिनेशन. तो वहाँ पर फैक्चुअल डिटेल्स पे इतना ओरिएंटेशन होता नहीं है, तो इधर आके उनको लगता है कि ये कहाँ गए और ये क्या हो रहा है. तो फैक्ट्स को कैसे याद रखा जाए, मतलब व्हाट, बिकॉज अ लॉट ऑफ बजट एलोकेशंस दे यूजुअली कम, फिजिकल डेफिसिट का पता होना चाहिए, ये सब हम लोग यहीं आके डिसाइड किए थे. तो हाउ डू वी डील विद दिस फैक्चुअल डिटेल्स? सी लाइक यू मेंशन फिजिकल डेफिसिट, कुछ भी उसके रिलेटेड आया है, आपका करंट अफेयर्स में आप वो लिख लीजिए कि फिजिकल डेफिसिट के बारे में है. सो यू नो व्हाट, आपको बहुत सेग्रीगेशन करना पड़ेगा. अगर आपको बाद में सॉर्टेड चीज़ें चाहिए, पहले सेग्रीगेशन कर लीजिए कि का फिजिकल डेफिसिट है, तो आपने अगर कहीं पढ़ा है तो उसके साथ रिलेट कीजिए, को रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि ओके आई हैव हर्ड दिस टर्म, ओके अभी ये डेटा आया है, ओके हाँ मैंने पढ़ा था, देन यू रिवाइज द कॉन्सेप्ट. सो इंटरलिंकेजेस help a lot. That is the main thing. Yes, and main thing is the revision, like weekly revisions and monthly revisions. And I think a very good help you can do it, students, make a peer group, 4 or 5 people. आप Zoom पे आए, Google Meet पे आए, टेक ए PDF, सब बोलो, रिवाइज करो, अच्छा इसमें ये था ये था ये था. वीकली आप अगर ऐसे भी करोगे तो रिवाइज हो जाता है बहुत अच्छे से. हम लोग प्रिपरेशन इतना सेक्लूडेड करते हैं, नो एक रूम में बंद हो गए, नो नो नो, टेक हेल्प फ्रॉम एवरीवन, ट्राई टू गेट अ पीयर ग्रुप, ट्राई टू मेक फ्रेंड्स, बिकॉज यू नो द जर्नी इज सो डिफिकल्ट, बोरिंग हो जाती है, दैट यू नीड अ फ्रेश ऑफ एयर, एंड फ्रेंडशिप इज समथिंग दैट गिव्स यू द रिलीफ. सो ऐसे हैक्स लीजिए, लोगों की हेल्प लीजिए, हो जाता है. Okay. So, and now if we go to the interview stage, what I just want to understand your attitude, that with what attitude you wanted to go with the interview room, and how were you able to also tackle various kinds of bouncer questions also, because they also come. So if this you can tell, definitely it would be helping students a lot, especially if they face that they have some kind of a baggage, because a lot of students do not have experience of that. Actually, in RBI Grade B interview is slightly unpredictable, because you cannot judge how the interview is going. Because बैंकिंग में क्या होता है, आपको पता चल जाता है, यू गेट एन आइडिया कि ओके इट वाज गुड और नॉट. बट इन RBI व्हाट आई थिंक दैट यू वोंट बी एबल टू असेस कि पैनल के माइंड में क्या है. सो स्लाइटली चैलेंजिंग, बट द थिंग इज लाइक जैसे आप दूसरे इंटरव्यूज देते हैं वैसे जाओ, बी वेरी नॉर्मल. येस दे विल ट्राई टू स्लाइटली suppress you, intimidate some point, or they will try to cross question you a lot. It will happen. It happened with me also. There was one panel member who was constantly looking at me, and yes, it was slightly intimidating, but then you have to hold yourself कि नहीं ठीक है, you just focus. If someone is asking, आप उस question पर focus कीजिए, don't think about anything else. And yes, prepare your biodata well. Like that biodata is very important. Whatever you are writing is very very important, because वो बहुत impact डालेगा. So whatever you are writing, make sure कि वो सही हो बिल्कुल, और उसके बारे में आपको सब पता है. Like if you are mentioning anything hobby like chess, you should know everything about it, because they will ask everything. तो अगर hobby नहीं है तो मत लिखिए, like just for filling, don't write anything, because they will ask. Exactly. So don't bluff, and try to stay natural, and also try to answer कि भाई वो जो चाहते हैं वैसा आंसर दो. लाइक कि हाँ ठीक है भाई RBI बेस्ट है, वो बेस्ट. लाइक दे विल आस्क कि इसको कंपेयर करो, जस्ट टेल दैट RBI द बेस्ट. आपके माइंड में जो है वो नहीं बोलना है, उनको सुनाओ कि भाई ये बोलना है. दैट्स द थिंग. सो यस, सम हैक्स आर देयर, बट विद प्रैक्टिस, विद डिस्कशंस, इट विल बी सॉर्टेड. यस, बिकॉज आई फील लाइक, एंड दिस इज व्हाट आई टेल टू स्टूडेंट्स आल्सो ड्यूरिंग इंटरव्यू, कि आपको कॉम्पिटेंसी तो दिखानी है, आपको कमिटमेंट भी दिखानी है टुवर्ड्स RBI, कि आप यही है और कुछ नहीं है. Because and those chairpersons are usually senior bureaucrats only. So those people are interested in everything. So they'll ask you everything. आप अगर ये सोच के चलें कि चेयरपर्सन आपसे केवल फाइनेंशियल चीज़ें पूछेंगे, उनके लिए उन्होंने पैनल मेंबर बिठा रखे, वो आपसे पूछेंगे. चेयरपर्सन कैन आस्क यू एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन व्हाटएवर यू राइट इन लेफ्ट. And last message, Niranjan, that you would want to tell to all the aspirants that are giving exam this year. Okay, I think as of now the rumors are there that notification will be out in month. I don't know whether it's true or not, because I never paid attention to those news. I'll just say that if you want to prepare, start preparing right now. It's the very beautiful time. अभी कुछ नहीं है, आप आराम से prepare करो.
एंड विद इन, अगर आप 3 से 4 महीने अच्छे से पढ़ते हो, आई थिंक फॉर फेज 1 यू आर ऑलमोस्ट रेडी, एंड इवन फॉर फेज 2 ऑल्सो यू आर हाफ डन. And when the notification comes, you will feel like, oh, मेरा तो syllabus हुआ है. Then you get into the practice mode. Yes. And then you get a sufficient time to revise, rectify your mistakes, and then you are well ahead with your ahead of your competitors. So अभी से start करो, regular रहो, consistent रहो, छोड़ो मत कि अरे आज पढ़ लिया, नहीं कल भी पढ़ना है. So the consistency is something that people do lack, and I think ये एक थोड़ा सा problematic area है कि constant push चाहिए. And one thing, there is nothing called motivation, there is only thing that is discipline. ठीक है, आपको अगर बाहर से मोटिवेशन देना पड़ रहा है, देन फिर आप उस प्रोफेशन के लिए, उस टास्क के लिए 100% कमिटेड नहीं है. सो डिसिप्लिन इनकलकेट कीजिए, रेगुलर रहिए, हो जाए. देखिए कंसिस्टेंसी की बात इन पर एकदम सही बैठती है. इन एवरी लेक्चर निरंजन इज ऑलवेज देयर. In lecture that we go on YouTube, Niranjan always is there, that showcase that how he is consistent all throughout his life, and that consistency because of which he is able to clear everything. I'm very glad to meet you, Niranjan. Thank you so much. And again, congratulations to you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.